Hello, assalamu alaikum everyone. How are you doing? Hello, hello. All right, let's see if the mic is working. Yes, it is. Awesome, awesome. Cool. Just gonna make sure the stream is going well on every platform. Looks good to me. Okay. I think we're good. So this is going to be a co-working stream, or इसमें we will look into first Focusdoro application, और उसके साथ साथ we are also going to look into Angular Cookbook जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. तो there's a second version of this book that I'm writing right now. तो it's going to be fun. But in the meantime, अगर आप लोगों के कोई भी questions हो तो you can definitely ask those questions. Or feel free to ask about React Native, I don't know, Chat GPT, any questions that you have. Or in the meantime, we will be also working with other stuff. For example, जो CodewithAhsan की site है जिस पे we are working on the new we are working on some new videos, but we are also planning के web development basics के बाद what will we look into after it. So it's going to be fun. But yes, feel free to ask any questions in the meantime. Or I'm also gonna open the chat talk as well. Mhm. There we go. Awesome. It's gonna on YouTube. Fahad Murtaza says, cool, awesome. Zabardast. Good, 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 good. सही हो गया. तो yes, I think as I said, oh, I did not realize कि I was also running a video, but okay, good. सही है. तो I think the first thing that we'll look into is Focusdoro, और फिर वहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं. Let me quickly get into one thing. So many tabs. All right. How to keep your productivity in Ramadan? For me, I think थोड़ा सा जो चैलेंज है वो ये है कि आई स्टिल हैव टू पुट टाइम इन डिफरेंट एरियाज. तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मेरे पास गूगल कैलेंडर के अंदर स्लॉट्स होती हैं आमतौर पे. उसको मोस्टली 100% फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल दे आर देयर टू रिमाइंड मी. और फिर उससे ये होता है कि आई मोस्टली गेट इनटू द स्टफ जो कि मैंने प्लान किया हुआ होता है, तो स्टिल काफ़ी इजी रह जाता है. तो जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है, आई थिंक थ्रू आउट द डे मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम ही रहती है. डिपेंड करता है उसमें कि आप कितना गैप ले रहे हो. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं दोपहर में 1 घंटा जो है वो नैप ज़रूर ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल रमज़ान के अंदर मैंने ये किया था कि क्योंकि मैं ब्रेक नहीं ले रहा होता, तो इसलिए व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं 11:45 पे जो है वो अपना काम वगैरह निपटा के वट एवर आई हैव डन, उसके बाद आई गो एंड आई स्लीप फॉर अबाउट 1 आवर. और उसके बाद फिर समटाइम्स 1 आवर, समटाइम्स 1 आवर 15 मिनट्स, डिपेंड करता है उस पर. लेकिन उसके बाद फिर ये है कि वो नैप बहुत ईज़ी कर देती है बाकी का दिन गुजारना, क्योंकि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो. आप थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर में कैलूला करना वैसे भी रिकमेंडेड है शरीयत के अंदर भी. तो मुझे जो है वो काफ़ी फ्रेश लगता है उसके बाद. तो आई थिंक दैट वुड बी, अगर आप दिन की बात कर रहे हो प्रोडक्टिविटी की, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है. तो येस, आई वुड रिकमेंड दैट. और उसके बाद फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है और फिर बाकी नमाज़ें हो जाती हैं. तो आई थिंक दिन के अंदर तो ये चीज़ हो जाती है. रात के अंदर की जो कहानी है वो भी डिपेंड करता है. जैसे मेरे पास जो टाइम अभी फ़िल वक्त है वो ये होता है कि मैं कुछ डेज़ में जो कि मेरी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग के अंदर, तकरीबन मेरे 4 बजे. अब अब मेरे ख्याल से मेरे 5 बजे हो रही होंगी वो. डेट्स इंटरेस्टिंग. तो उसके लिए फिर मुझे जल्दी सोना होता है, तो मैं अक्सर जो है वो तकरीबन इशा के बाद फ़ौरन सो जाता हूँ. तो फिर उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. तो डैट ऑल्सो हेल्प्स. लेकिन अगेन डिपेंड करता है. पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि जो ऑफिस हैं वो थोड़ा सा लेट खुलते हैं. यहाँ पे ऑफिस जो है वो तकरीबन लोग 7:30 बजे भी, 8 बजे भी पहुँच चुके होते हैं. तो
मेरी अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि मैं मोर और लेस 7 बजे इस वीक और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक भी मैं 7 बजे ऑफिस जा रहा हूँगा सुबह में, और उसके बाद फिर कोशिश ये करूँगा कि मैं 3 बजे तक ऑफ़ ले लूँ वहाँ से। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मेनली मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 3 बजे तक वहाँ से फ्री हो जाऊँ। पर 3 बजे आप फ्री हो जाते हो तो फिर आप घर आके काम कर सकते हैं, काम कह रहा हूँ, घर आके आपको जो भी अगर कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो आप कर सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। तो बस ये ज़रूरी है कि आपका जो ऑफ़िस का टाइम है वो आप प्रॉपर्ली दें। जैसे मैं 7 बजे पहुँच रहा हूँ तो मैं 2 घंटे हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब 12 बजे जा रहा हूँ और फिर मैं 3 बजे वापस आ जा रहा हूँ। तो हमें ये लग्ज़री नहीं मिली हुई कि हम, जैसे पाकिस्तान में ऑफ़िसेज़ में होता है कि आपको थोड़ा कम टाइम दे देते हैं, या रमज़ान टाइमिंग्स होती हैं। यहाँ पे ऐसी कोई रमज़ान टाइमिंग्स नहीं होती। यहाँ तो ख़ैर ईद का भी नहीं पता चलता कि ईद किसी दिन है, क्योंकि देयर इज़ नोबडी इन द ऑफ़िस। क्या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या रमज़ान ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो येस, आई मीन हमें काम एटलीस्ट पूरा ही करना होता है। और एज़ अ मुस्लिम प्रोफेशनल भी ये ज़रूरी है कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का एक लेक्चर देख रहा था जिसमें मुस्लिम प्रोफेशनल्स की बात हो रही थी। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक मुस्लिम प्रोफेशनल का काम ये है कि वो हर काम एहसन तरीके से करे, या बेहतरीन तरीके से करे, या एक्सीलेंस के साथ करे। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने ऑफिस के अंदर जो है वो एक एक घंटा 1.5 घंटा घर वालों से बात नहीं कर सकते। आप जो है वो फेसबुक वगैरह सर्फ नहीं कर सकते। आप अगर ऑफिस टाइमिंग में हो तो ऑफिस का काम ही करोगे। अगर आपने 1 घंटा यहाँ वहाँ कर दिया तो आप उसको कवर करेंगे। तो ये तरीक़ेकार होना चाहिए। अबू ज़र कह रहे हैं, अभी आप किस कंट्री में हैं? अबू ज़र, मैं हूँ स्वीडन में। स्वीडन का जो दारुल खिलाफ़ा है स्टॉकहोम, मैं उसके अंदर हूँ फ़िल वक़्त। माय वर्क टोल्ड मी आई कैन वर्क फॉर 6 आवर्स ओनली। ओह ज़बरदस्त, दैट्स गुड। वर्क फ्रॉम 3 AM टू 9 AM एंड देन आफ्टर इफ्तार। ओके, ज़बरदस्त। बट फ़ाहद, आप फुल टाइम काम कर रहे हो कहीं पे अभी, या फिर आप एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, या कैसे काम कर रहे हो आप? योर नेम इज़ एहसन आफ्टर ऑल, यस। कोइंसिडेंटली यस। बट यस, डिपेंड करता है, आई मीन। और यहाँ पे तो खैर रोज़े भी थोड़े से लंबे होते हैं। अभी हम लोग यही देख रहे थे कि लास्ट जो रोज़ा है वो हमारा पड़ रहा है 3 सवा 3 पे शुरू हो रहा है वो, और तकरीबन 8:20 पे ख़त्म हो रहा है वो। यस, एज ऑफ नाउ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्टर। ज़बरदस्त यार। लॉर्ड एसिड, क्या हाल है? ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है यार, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू फॉर आस्किंग यार। आप बताओ आपका कैसा जा रहा है? मेरा असल में अभी जो है वो 2 रोज़े छूट गए अनफॉर्चुनेटली, और वो इसलिए क्योंकि मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे घर में जो है वो मेरी वाइफ़ भी बीमार थी, मेरा बच्चा भी बीमार था। तो पहले मैं बीमार हुआ, फिर वो बीमार हुए, फिर मैं बीमार हुआ। अब दोबारा मेरे बच्चे को खांसी लग गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो जो बीमारी है वो यहाँ से वहाँ जंप कर रही है, वहाँ से वापस जंप कर रही है। तो अभी देखते हैं क्या किस तरीके से इसको कैटर किया जाए। लेकिन मेरा जुम्मे को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जुम्मे के बाद हफ्ते को मैं नहीं रख पाया रोज़ा, आज नहीं रख पाया संडे को। तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा से फिर कंटिन्यू करूँगा। तो और सैटरडे की बात है ये, हाँ सैटरडे को तो मैंने अच्छा खासा आराम किया था। तो फिर मैं शाम में जब उठा तो मैंने जो है वो अपने बच्चे को उठाया गोद में, और ऐसा लगा कि मेरी कमर तो गई, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन किस्म की कमज़ोरी हो रही थी। अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। काफ़ी सारी पैनाडोल खाने के बाद, और बेगम से जो बहुत सारी अ, चाय और गर्म पानी, उस अदरक का, और पता नहीं क्या क्या उसके बाद, तो अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। राफ़ी अहमद, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल कह रहे हैं टेक केयर, बिल्कुल यार, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये चल रहा है। एक और काम ये करना था कि जो बुक है उसका चैप्टर 8 मुझे ख़त्म करना था, तो वो अभी तो नहीं हो पाया। और कल मुझे, यानी कि आज मुझे रात तक ख़त्म करना था, तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया उसको। वो अभी, यानी कि उसकी बिल्कुल फ़र्स्ट जो रेसिपी है उसमें मैं कुछ काम कर पाया हूँ। तो आई वाज़
थिंकिंग ऑफ वर्किंग ऑन इट अभी, कि मैं सॉर्ट ऑफ कोवर्किंग सेशन ऑन कर दूँ। इसमें व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं तकरीबन 25 मिनट तक बहुत फोकस काम कर रहा होता हूँ, देन आई टेक क्वेश्चंस 5 मिनट या कुछ इस तरीके से, या 10 मिनट्स इवन, और उसके बाद फिर मैं 25 मिनट तक काम करता हूँ। तो यू कैन वर्क ऑन योर ओन इन दिस केस, और आप सवाल पूछ सकते हो और फिर मैं उसका जवाब दे रहूँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी जो बुक है उस पे इंशाल्लाह ताला काम कर रहा हूँ। तो इनिशियल काम तो मैंने अपने लैपटॉप पे किया हुआ है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। और ये पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ ये एक वाइट पेज लगा हुआ है यहाँ पे, तो उस पे मेरी पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है कि मुझे कौन कौन सा चैप्टर कब कब डिलीवर करना है पब्लिशर्स को, ताकि फिर वो रिव्यू कर सकें और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखते हैं यार क्या बनता है। एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई थी अभी कि जो अभी सेकंड वर्जन ऑफ द बुक है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि वो फर्स्ट वाली जो थी वो पैक्ट के साथ हुई थी डायरेक्ट, और दूसरा वाला जो है वो इनका कोई सेक्शन है एक्सपर्ट्स का, एक्सपर्ट्स पब्लिशिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें जो है वो आपकी तस्वीर भी जाती है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि उसका क्या किया जाए। मोस्ट लाइकली मैं तस्वीर हटा दूंगा आई थिंक, क्योंकि मैंने जो दी थी वो मुझे कुछ मुनासिब लगी भी नहीं, और नाउ डेट आई थिंक अबाउट इट मैं शायद रिमूव करवा दूंगा, मोस्ट लाइकली करवा दूंगा। सर फ्रेशर्स के लिए स्वीडन में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज रिएक्ट डेवलपर फ्रेशर? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान से स्वीडन के अंदर बुलाने में बहुत ख़र्चा होता है, और फ्रेश के लिए कोई भी इतने पैसे नहीं लगाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो नहीं, फ़िल वक्त तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये रिमोट भी नहीं देते। तो नहीं, शॉर्ट आंसर नहीं। लॉन्ग आंसर, अगर तो आप कोई बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है तो शायद ये आपके बारे में सोचेंगे, बट फ्रेशर का चांस नहीं है। तो आई वुड से कि कुछ साल बाद अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे तो शायद शायद जवाब इसका हाँ हो जाए उस वक्त, या इंशाल्लाह कुछ ऐसा सीन बन जाए कि यहाँ से लोग हायर करना स्टार्ट कर दें फ्रेशर्स को पाकिस्तान के अंदर। अभी एक दो चीज़ें जो हुई थी वो ये थी कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन भी आया था यहाँ पे, पाशा का, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से। तो कुछ वो लोग कुछ कुछ चीज़ें वो लोग देख के गए हैं यहाँ पे स्वीडन के अंदर, कुछ बातचीत भी करके गए। अम, लेकिन अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, जिसमें जिसमें प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान की जितनी अच्छी तारीफ़ चल रही है पूरे दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मना होती जा रही हैं कि यार आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की तरफ कोई ट्रांजैक्शन ना करें, आप वहाँ से कोई अमाउंट ना मंगवाएं। इवन एक बंदा था जिसका यहाँ पे बिज़नेस है, वो कह रहा था कि मैं उसको जो है वो पता नहीं बैंक के कितने फॉर्म्स भरने पड़े सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो अपनी यहाँ वाली कंपनी से अपनी पाकिस्तान वाली कंपनी में पैसे भेजता है। सिर्फ इस चीज़ के लिए भी उसको पता नहीं कितने फॉर्म्स भरने पड़े कि मैं क्यों भेज रहा हूँ, और वो भी उसमें भी बड़े पंगे किए उन्होंने। तो खैर अभी तो बुरे हालात हैं, लेकिन वो ओवरऑल ही हैं, यानी कि एक साइड पे पूरी दुनिया के हालात हैं और दूसरी साइड पे हमारे अपने पाकिस्तान के हालात हैं। तो देखें सर, तो आपके ख्याल में कौन सी कंट्री बेस्ट होगी फ्रेशर के लिए? फ्रेशर के लिए अबू ज़र पाकिस्तान ही बेहतर है फिल वक्त, अगर आप पाकिस्तान में हो तो। कोई और कंट्री जो है वो फ्रेशर्स को नहीं बुलाती जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई यूनिक टैलेंट नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी से उठा के कोई भी जॉब नहीं देता। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये फैक्ट है, और ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं है, ये आप इंडिया के लिए भी यही है और दूसरे ममालिक के लिए भी यही है। कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी फ्रेशर को नहीं बुलाती जब तक आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस ना हो और आप कोई बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट ना हो। तो सीधा सा ट्रुथ जो है वो ये है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आप अपने स्किल सेट पे फोकस करो, अभी आप मुल्क से बाहर निकलने पे फोकस नहीं करो, यू आर नॉट देयर येट। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो सकता है कि कोई मिल जाए, बट इन जनरल मुश्किल होता है। तो आई होप दैट मेक सेंस। जितने लोगों को एटलीस्ट मैं जानता हूँ जो यहाँ पे स्वीडन के अंदर आए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे मुंसलिक हूँ, तो उनमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जिनका 3 साल का, 4 साल का, ज़्यादातर लोगों का 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। या फिर वो लोग हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आए थे पहले, और फिर उन्होंने तालीम मुकम्मल की और फिर उसके बाद जॉब ली। तो जो पढ़ने के लिए आए थे वो यहाँ पे तकरीबन 6-6 साल से हैं, 4-4 सालों से, और उनके फिर 2 साल के एक्सपीरियंस होते हैं इस तरीके से। तो या तो आप पढ़ने के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, फिर आपके पास चांस है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो
और फिर आप यहाँ पे अप्लाई करें आने के लिए स्टडीज़ के लिए, और स्टडीज़ फिर मुकम्मल करके फिर आप जॉब लें तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आजकल एक ये भी बहुत ज़्यादा हमारे जो कुछ अच्छे भाई बहन हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो स्टडीज़ के लिए आते हैं लेकिन फिर वो फ़ौरन से जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो उस पे भी बहुत सारा एक्शन अब ज़्यादा लिया जा रहा है यहाँ पे कि ये ना किया जाए, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बुला रहे हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप या तो आप यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आएँ मास्टर्स के लिए और आप मास्टर्स करके फिर जॉब कर लें, या तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करें, थोड़ा अच्छा पोर्टफोलियो वगैरह बनाएं और उसके बाद आप अप्लाई करें। तो आई होप दैट हेल्प्स। ठीक हो गया? अब हम काम शुरू करें। एक चीज़ तो मेरे ख्याल से हम ये देख लेते हैं फ़ौरन से कि हमारी जो क्लॉक है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अ, चलें भाई, ज़रा ज़रा देखते हैं इसको। और फोकस डोरो। अच्छा, इसको ज़रा बंद कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा यूँ आ जाए। सही है। और काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा, अब ये लाइव प्रोडक्शन पे फिक्स कर रहे हैं हम, लेकिन चलेगा। अच्छा जी, लॉगिन भी कर लेते हैं। अबू ज़र कह रहे हैं थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं और इसको ज़रा शेयर करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। ओके, सही है। चलो इसको ज़रा ऐड करते हैं अपने टाइमर पे। हम्म और इसको करते हैं ओके। इसको हम करते हैं रिफ़्रेश और देखते हैं कि ये क्लॉक जो है हमारी वो चलती है कि नहीं चलती। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है जो मैंने काफ़ी अर्से पहले बनाई थी, फोकसडोरो के नाम से। और इसका मकसद ये था कि हम लाइव स्ट्रीम पे या इवन इसके अलावा भी फोकस करके काम कर सकें और ये टाइमर की तरह चलती रहे हमारे पास। तो लेट्स सी कि ये काम करती है कि नहीं करती। सही है। अच्छा, और ये जो है वो शेयर टाइम के साथ चलती है। तो इवन इफ़ आई गो टू अदर पेजेस, आई थिंक ये स्टिल काम कर रही होनी चाहिए। बिल्कुल कर रही है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आई थिंक हम इसको लेके चल सकते हैं यहाँ से। ज़बरदस्त हो गया। और ये काम क्या मैं यही काम अपने चैट वाले पेज पे कर सकता हूँ? लेट्स सी। ये हम चले गए चैट वाले पेज पे और यहाँ पे हमने, ज़बरदस्त यार। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, ये प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें इसको रोकना पड़ेगा और इसको चलाना पड़ेगा। सही है, सही है। ये सॉर्ट ऑफ बग है। इसको हम बग ही कह देते हैं, इसको हम फीचर नहीं कहते अभी। लेकिन ये है यहाँ पे, ये एग्जिस्ट करता है। तो हाउ अबाउट वी ट्राई टू डू दिस। इसको थोड़ा सा, इस बेचारी फोकस डोरो को थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। और क्या ख्याल है, इसको यहाँ ले आएँ? यहाँ सही है, सही है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम चैट के मैसेजेस यहाँ से लेते रहेंगे और साथ में काम भी करते रहेंगे और फोकस करके काम भी करते रहेंगे इन द मीन टाइम। ठीक है। अच्छा, अक्सर स्ट्रीम्स के अंदर ये होता है कि जो कोवर्किंग स्ट्रीम्स होती हैं उसमें ये होता है कि आप चैट पे काम कर रहे होते हो लेकिन मोर लेस पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है या इस तरह से कुछ होता है। तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह वाली मेरी आदत तो नहीं है। तो हम बस ये करेंगे कि हम टाइमर देखते रहेंगे और टाइमर के साथ साथ फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं बीच में देखता रहूँगा, लेकिन मेनली जो है वो मैं बुक पे काम कराऊँगा। ठीक है। तो आप लोग अपने तौर पे देखते रहें। अगर आपको कोई काम करना है, कोई बातचीत करनी है तो यू कैन डू इट, बट आई विल बी लाइव और आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। इसमें एक काम और ये हो सकता है कि मैं अपना एक सर्वर जो है वो ऑन कर दूं, अगर वो मेरे पास है तो। लेट मी एक्चुअली सी दिस। तो इसको हम लेके चलते हैं अपने, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा या नहीं। लेट्स हैव अ लुक नाउ। नहीं, ये चल रहा है। चलो, गुड हो गया, ज़बरदस्त। Samyuddin, salam. Hopefully your Ramadan is going smooth. How helpful do you think LinkedIn is? Do you believe in having a decent LinkedIn profile makes a difference and helps you stand out? Great timer though. Thank you यार समी।
समी मेरी एक टॉक है, आई एम नॉट श्योर आपने देखी है नहीं दी, लेकिन मैं उसको उसका लिंक आपको दे देता हूँ, वो ज़रूर देखना। लेट मी सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। कंटेंट, ये वाली टॉक है, इसको ज़रूर देखना। ये एग्जैक्टली इसी बारे में मैंने बात की है। नहीं, ये तो गलत लिंक दे रहा है। गेट शेयरेबल लिंक, ये लिंक है। तो अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं तो शॉर्ट आंसर ये है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर फॉर योर प्रेजेंस और फॉर अट्रैक्टिंग रिक्रूटर्स। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन इसकी अहमियत क्या है, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और इस पे काम कैसे किया जाए, वो आपको उस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा जो मैंने अभी शेयर किया है। तो आई होप दैट हेल्प्स यू, ठीक है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। चलें टाइमर पे चल लेते हैं। आई एम हैप्पी कि यार मैंने आई थिंक मैंने कुछ फिक्सेस किए थे इस क्लॉक के अंदर, तो नाउ नाउ इट सीम्स टू बी वर्किंग, और ये अच्छी बात है। लाइव स्ट्रीम में चीज़ें काम करनी चाहिए। नहीं नहीं काम करेंगी तो थोड़ी सी बेइज्जती सी फील होती है। लेकिन मेरे एक रिश्तेदार थे, वो बड़ी अच्छी बात करते थे। वो कहते थे कि गर्मी और बेइज्जती जितनी ज़्यादा महसूस करोगे उतनी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए आप महसूस ना करें तो नहीं लगती। चलें जी, अब एक काम करते हैं, बहुत देर हो गया खड़े हुए, तो ज़रा बैठ जाते हैं। हम्म, सही हो गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट GPT-4 वर्जन 1? नशरा ताहिर। नशरा, मेरे ख्याल से मतलब व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक इट्स गुड। इसमें असल में इसका यूजेज जो है ना, वो बहुत डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और किस हद तक कर रहा है। जैसे मुझे बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा GPT-4 से भी मिलना स्टार्ट हो गए, बट उसकी एपीआई को मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ। एक काम मैं ये ज़रूर देखना स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, मे बी दिस वीक और द नेक्स्ट वीक, और वो ये है कि जो ओपन एपीआई की एपीआई है स्पेशली फॉर मेकिंग जीपीटी प्लगइन्स, तो मैं उसको देखना स्टार्ट करूँगा। मैंने अभी देखा था कि कुछ कंपनीज़ ने जो है वो अपने प्लगइन्स बनाए हैं, और उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट कंपनी वो है जिसमें मैंने यहाँ पे स्वीडन के अंदर काम भी किया है, वो है क्लारना। तो क्लारना ने बड़ा अच्छा प्लगइन बनाया है फॉर शॉपिंग, तो आई एम गोना बी लुकिंग इनटू जीपीटी प्लगइन्स। वो हो जाएगा तो फिर मैं आपको कुछ बता सकूंगा। उसमें एक चीज़ मैंने देखी थी कि एक दो मैंने ट्यूटोरियल जो ऑनलाइन देखे थे जो अब तक आ चुके हैं, उसमें पाइथन का यूजेज ज़्यादा है, तो आई विल सी कि उसमें नोट जेएस का यूजेज अगर कहीं मुझे मिल जाता है तो आई विल बी लुकिंग इनटू दैट। वरना वरना फिर देखेंगे देखेंगे जो होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा हम ये सोच रहे हैं कि हम काम करें कैसे। अगर मैं अपना लैपटॉप यहाँ रखूँ तो हो जाएगा, फिर मुझे वहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा, क्या करें। लैपटॉप का स्टैंड लाना पड़ेगा, स्टैंड ले आते हैं फिर काम कर लेते हैं। फ़िदा मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग, आई वांट टू गो फॉर इट, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम अ प्रो। फ़िदा, डिपेंड करता है हाउ मच टाइम डू यू पुट इनटू इट। आप रोज़ अगर 8 घंटे दे रहे हो तो आप जल्दी हो जाओगे, जल्दी अच्छे हो जाओगे, और अच्छे ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, इसमें कोई मैं लिमिट नहीं दे सकता, टाइम नहीं दे सकता कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आई वुड से एटलीस्ट 6 मंथ्स की कोशिश करो, उसमें पढ़ो और डिफरेंट प्रैक्टिस करो, तो आप इस लेवल पे आ जाओगे कि यू विल बी कंसिडर, हाँ यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बट डिपेंड करता है। और प्रो जो है ना, वो एक बहुत ही वेग टर्म है। प्रो देखने का डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अंदाज होता है, कोई किसी को प्रो समझता है, कोई किसी लेवल को प्रो समझता है। तो ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादातर फ्रेश लोगों से ही मिलते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो इसका नॉर्मल जवाब यही है कि डिपेंड्स। आप बगैर इस चीज़ को सोचिए कि कितना टाइम लगेगा, जस्ट गिव इट ऑल द टाइम दैट यू कैन। इससे ज़्यादा बेहतर आंसर मैं इसका नहीं दे सकता, तो मैं स्टैंड लेकर आता हूँ। चलो भाई, देखते हैं कि इसका कुछ हो सकता है कि नहीं। इस फोकस को मेरे ख्याल से बंद ही कर देते हैं। हमने फोकस किया तो बिल्कुल नहीं है, इसको फोकस को रीसेट भी कर देते हैं। इसने रीसेट किया कि नहीं किया? ओके, सही है।
एक बग तो मुझे मिल गया कि रीसेट जो है ना वो रीसेट हो नहीं रहा है। चलें इसको भी देखते हैं। रिकमेंड सम रिसोर्सेज भाई। आपने फिदा, आपने कोड विद एहसन पे जो फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स है, क्या आपने वो देखा है अभी तक? या आपने नहीं देखा है अभी तक? करंटली आई एम फॉलोइंग यू। फॉलोइंग यू का क्या मतलब है कि आपने वो कोर्स देखा है कोड विद एहसन डॉट डेव पे या नहीं देखा है? कोड विद एहसन डॉट डेव की जो वेबसाइट है उस पर एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है फ्री में। आप क्या आपने वो कोर्स देखा हुआ है, या आपको पता है कि वो कोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? चलो ये तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। आपने बोला यस, तो बस फिर आप पहले वो फॉलो करो, उसके बाद की बाद में देखेंगे। एक एक वक्त में एक काम करना चाहिए, एक वक्त में 10 काम नहीं कर सकते। सर विच टेक्नोलॉजी शुड बी लर्न फॉर फ्यूचर जॉब्स इन लाहौर। आप लाहौर की जॉब मार्केट देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसमें फुल स्टैक डेवलपर की ज़्यादा डिमांड है, या एंगुलर डेवलपर की ज़्यादा है, या फ्रंट एंड डेवलपर की ज़्यादा है। फ्यूचर लाहौर की डिमांड अपनी एक बहुत डिफरेंट है, और इन जनरल भी बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, प्राइमरीली बिकॉज मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, और दूसरा ये कि इट डिपेंड्स। तो आप फ्रंट एंड इंजीनियर होते हुए ये काम कर सकते हो कि आप फ्रंट एंड में अच्छे होने की कोशिश कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और फिर आप अगर आप चाहो तो आप बैक एंड इंजीनियरिंग भी देख सकते हो। तो अगेन इट डिपेंड्स, एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आंसर है इसका। ठीक हो गया। चलें यार, इसको इसको हमने जो है ना वो बड़े स्टैंड पे लगाना है, तो देखते हैं। हम्म थोड़ा सा टाइट भी कर देते हैं। गुड हो गया आई थिंक। मच बेटर, ठीक हो गया। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलें फोकस टाइम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी कर रहे हो अपने घर में वो करते रहो। व्हाट आई विल डू इज़ कि आई बी फोकसिंग ऑन द बुक, और फिर उसमें हम जो भी क्वेश्चंस वगैरह ले रहे हैं वो हम साथ साथ लेते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं ये करना चाह रहा था जो मैंने अभी नहीं किया, सॉरी। लेट मी क्विकली डू दैट, और इसको मैं स्क्रीन पे आके ही कर देता हूँ। तो लेट मी सी अगर मेरे पास वो कोड ओपन है। ये तो मेरी साइट का है, मेरे पास वो होना चाहिए पॉट, नहीं, CWA कोर्सेज PE, नहीं, हम्म मतलब अब मुझे नहीं मिलेगा ऐसा। चलें देखते हैं इफ़ आई कैन फाइंड इट। सिग्मा मीमर, NG कोर्सेज PE, साइट्स एंड ऐप, एंगलर कुकबुक, ना ना ना, नहीं यार, फिर कहाँ पे है ये? नुप, काम ही करते हैं, ओपन फोल्डर करके देखते हैं। अ, उम, 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 कहीं मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया? डैट वुड नॉट बी गुड। कॉन्ट्रीब्यूशंस, ना ना ना, फैक्ट, नो नो नो, नोप। लुक्स लाइक मैंने शायद फोल्डर डिलीट कर दिया है। दैट्स नॉट गुड। इसको करते हैं छोटा। हाउ टू ऐड कस्टम फॉन्ट इन Next.js टेलविंड CSS। आप टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। इसके ट्यूटोरियल्स मेरे ख्याल से आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर आपको
आतिफ, आपको टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर उसका फ़ॉन्ट ऐड करना पड़ता है। तो आपकी जो टेलविंड config.js होती है, जैसे कि यहाँ पे होगी मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो सैंस फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नूनीटो इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगेन इसके ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे बहुत ईजीली, तो आई वुड से लुक इनटू दैट। अच्छा, ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि मुझे जो है वो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे चाहिए, वो किधर है? हाँ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, अच्छा ये अपने प्रोजेक्ट को मैंने खुद ही स्टार्ट किया हुआ है, क्या बात है। अब इसकी जो env फाइल है वो तो मेरे पास नहीं है, के है, लेट्स सी। एक हम काम ये कर लेते हैं कि पहले तो इसको करते हैं git clone, क्योंकि मुझे याद है इसके लिए मुझे कोई ना कोई तो env फाइल चाहिए थी। हम्म, और अगर वो env फाइल नहीं है ना तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। हम्म, db.js, इसके अंदर हम process डॉट env यूज़ कर रहे हैं किसी फाइल में कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं TMI क्लाइंट में, तो इसका मतलब है ये ट्विच यूज़र नेम पासवर्ड और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और ये मेरे पास नहीं है अभी। गिव मी 1 सेकंड, मैं ज़रा अपनी की चेन देख लेता हूँ। तो अगर मैं चैट पे जाऊँ और लेट्स सी की पास, ट्विच 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 एडिट एंट्री, नोप। यार ये तो मसला है। क्लाउडिनरी कोड विद एहसन में भी यहाँ पे शायद मेरे पास हो। प्रोडक्शन, मेलचिम्प, फायरबेस, नहीं मेरे पास नहीं है। अब क्या करें, क्या करें? हम्म 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 हम्म। चलो एक काम ये करते हैं कि हम एक स्टैटिक मैसेज बना देते हैं। हम क्रिएट करते हैं एक हम क्रिएट करते हैं एक नया टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को हम कहते हैं आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसको हम करते हैं ओके, और इसको हम डालते हैं टेक्स्ट ऑन कुकबुक। सब नज़र आ रहा है? इसको करते हैं छोटा और इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। और क्या करें, हम फॉन्ट अपना इस्तेमाल करते हैं नूनीटो, ठीक है। और हम करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन, कलर ब्ला ब्ला ब्ला, ओपेसिटी बिल्कुल ऐसी होगी। आस्क योर क्वेश्चंस इन चैट, ठीक हो गया। ये हमने इसका वो रख लिया है। फिर हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम कर देते हैं ब्लैक, ओके। लेकिन अब ये बैकग्राउंड लगा क्यों नहीं रहा? बैकग्राउंड ओपेसिटी, ये आ गई बैकग्राउंड ओपेसिटी। अलाइनमेंट लेफ्ट की बजाय करते हैं सेंटर। वर्टिकल अलाइनमेंट छोड़ देते हैं। चैट लॉग मोड, आई डोंट नो ये क्या होता है, बट ओके। और कस्टम टेक्स्ट एक्सटेंड्स, नो, गुड हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ ले आते हैं। सही हो गया। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन शायद हम इसके साथ काम चला सकते हैं।
या तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसको डबल लाइन में लाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके हक में हूँ अभी। हम्म, सही है, आई थिंक इट लुक्स गुड। इसमें ज़्यादा साइंस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एंडियलाइजिंग हो गई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ज़रूरत कुछ नहीं है। कलर ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप कलर अगर चाहें तो कोई इंटरेस्टिंग भी ला सकते हैं, जैसे ये। और उसके बाद आप सिलेक्ट कलर कर सकते हैं ब्लैक। सेव। क्या शदीद बुरा लग रहा है। लेकिन हाईलाइट होके नज़र आ रहा है ना, ज़बरदस्त। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें स्पेस चाहिए तो स्पेस पॉसिबल नहीं है। स्पेस पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से स्पेसेस डालने पड़ेंगे, लाइक दिस। क्या बात है, हैकर मैन। और ये हो गई ये खूबसूरत। यू आई यू एक्स की चैम्पियनशिप हो गई ये तो। चले भाई, इसको अब क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं, और अब ज़रा किताब पे काम कर लेते हैं। सही है, फोकस करें, फोकस करते हैं। और आप चाहें तो आप बिल्कुल सवालात पूछ सकते हैं चैट के अंदर, एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर। रीसेट, फोकस, और हमने कर दिया है टाइमर स्टार्ट। अगर हम ब्रेक पे जाते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेक पे जा रहा है, फोकस पे जा रहे हैं तो फोकस पे जा रहा है। सही है, और ये हो गया टाइमर स्टार्ट, गुड है। सही है, चलें जी। हम्म। अच्छा जी। ज़ुबैर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, सॉरी वो मैंने नहीं पढ़ा। I'm in third semester in BS Data Science. I learned Angular in last 2-3 months. Now working on a project. I also like Python and math. Now I'm confused what to continue from, वेब और डेटा साइंस। यार जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो फॉलो करो। तो अगर आपको वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वेब फॉलो करो, अगर आपको डेटा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो डेटा साइंस फॉलो करो। मेरी ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है वो वेब रही है, तो मैंने वेब में ही किया हूँ। लेकिन अब मेरी प्रेफरेंस थोड़ी सी, प्रेफरेंस बोल लो या थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं खुद भी मशीन लर्निंग के अंदर देखूँ, तो आई माइट स्टार्ट लुकिंग इनटू पाइथन। अभी ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं मैंने। आई माइट डू पाइथन, आई माइट डू रस्ट, दोनों में से कुछ एक उठा रहा हूँ मैं। बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट वेब डेवलपमेंट, जो मैं काफ़ी अर्से से करता आ रहा हूँ, तकरीबन 10 साल से, आई माइट लुक इनटू समथिंग एल्स। तो यस, आपको अगर दोनों में से ये समझ आ रहा है कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो वो चीज़ पिक कर लो, ठीक है। आई एम लर्निंग बैक एंड ट्राइंग टू लर्न नोट जेएस इन डेप्थ बिफोर मूविंग टू एक्सप्रेस। आई थिंक आई हैव टू मेक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इन नोट जेएस एंड रिकमेंडेशन। मोहम्मद उस्मान, नोट जेएस इट्सेल्फ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे आप बहुत ज़्यादा लर्निंग का टाइम लगाओगे। नोट जेएस इन्वायरमेंट है जिस पे आप एप्लीकेशंस रन करते हो, और जब आप नोट जेएस का कोई ट्यूटोरियल उठाओगे तो आमतौर पे नोट आपको एक्सप्रेस जेएस के साथ ही मिलेगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक पूरा साल लगाना पड़े पहले नोट जेएस सीखने पे और फिर एक्सप्रेस पे आप जाओगे। तो लर्न अलॉन्ग द वे। टेक्नोलॉजीज़ लर्न करना मकसद नहीं होना चाहिए, चीज़ें बनाना मकसद होना चाहिए। क्योंकि जब आप चीज़ें बनाते हो तो आप उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी या टूल्स को सीख रहे होते हो। तो लोग आपको जो है वो टेक्नोलॉजी के पैसे नहीं देते, लोग आपको एप्लीकेशंस बनाने के पैसे देते हैं, या प्लेटफॉर्म्स बनाने के पैसे देते हैं, या उनके बिजनेस खड़े करने के पैसे देते हैं। तो कोशिश ये करो कि आप एप्लीकेशंस बनाओ, और वो ट्यूटोरियल फॉलो करो जिसके अंदर वाकई कुछ चीज़ बनाई जा रही हो। तो एक पूरा नोट जेएस का क्रैश कोर्स है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप तो आप कोड विद एहसन पे जाओ, वहाँ पे मर्न स्टैक सर्च करो, तो हमने मर्न स्टैक यूज़ करते हुए जो है वो एक पूरी एप्लीकेशन बनाई है फ्रंट टू एंड। तो आप उसको देखो वो किस तरीके से बनाई जा रही है, और फिर ट्राई टू डू द सेम। जैसे मैंने यहाँ कहा, टेक्नोलॉजी इस पे फोकस करने से बेहतर है कि आप यू फोकस ऑन के बना क्या रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आपने एक चीज़ पे बना ली या एक टेक्नोलॉजी पे बना ली तो दूसरे पे बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आई होप दैट मेक सेंस।
इंटरेस्टिंग। ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी पहले। वी हैव समथिंग कॉल्ड रीस्ट्रीम चैट एप्लीकेशन, ये तो मैंने पहले देखी ही नहीं। ज़बरदस्त यार, इससे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेट्स सी। पेरेंट्स नोटिफिकेशन, मैं बिला वजह कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मोहम्मद एहसन अयाज oops gmail.com। पासवर्ड किधर है, ज़रा पासवर्ड मैनेजर से निकाल लेते हैं। फिदा पूछ रहे हैं वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट। भाई आई कैन नॉट सी द फ्यूचर। यार अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं तो आई डोंट नो, अगर मैं लॉन्ग आंसर दूं तो इट डजेंट मैटर। आप जो भी ट्रेंड है उसके पीछे भागने के बजाय अगर आप फोकस करोगे कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ और उसमें अच्छे हो जाओ, तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी जो है वो ज़रूर सीख रहे होगे, और वही चीज़ मैटर करती है इन द फ्यूचर। ठीक है, तो डैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। कोशिश करो कि टेक्नोलॉजीज़ लर्न करने के बजाय आप लर्न करो हाउ टू क्रिएट डिफरेंट एप्लीकेशंस, हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स, क्योंकि वो चीज़ आगे जाके काम आती है। एज आई मैंशन, क्या सारे क्लिक कर दिए यार, ये तो वेरिफिकेशन में फंसा देता है। ओके, गुड हो गया। मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या हुआ? वही मेरे पेजेस कहाँ हैं? अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि अपीयरेंस और नोटिफिकेशंस एंड सेलेक्ट द सेटिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट, उसके बाद फिर आप ये करेंगे। अच्छा, मुझे तो नोटिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने। ये तो मजाक हो गया हमारे साथ। बेड इन स्ट्रीम, ये रहा ना नोटिफिकेशन, टेक्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन। टेक्स्ट टू स्पीच भी कर लें क्या? वॉइस माइक्रोसॉफ्ट जीरा। चलो अब एक काम करते हैं, एक नई चीज़ खोलिए, इसको ज़रा ट्राई करते हैं। कोई मैसेज भेजें ज़रा, हाय हेलो कीजिएगा, ताकि ये ज़रा स्ट्रीम पे सुनाए हमें। भेजें भेजें, कोई मैसेज भेजें ताकि हमें पता चले। तो हमने एक नई चैट अभी अभी, सॉरी चैट एप्लीकेशन अभी अभी इंस्टॉल किया है। कोई आवाज़ आई? कोई नोटिफिकेशन आई? नोप। सिर्फ सिर्फ खेल 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 रहा है हमारे साथ। मैं ज़रा आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये चैट एप्लीकेशन है भाइयों, और इन्होंने कहा हमें कि आप जो है वो जाएं नोटिफिकेशंस पे, और ये करेंगे तो हो जाएगा। सही है, अब हमने ये किया, लेकिन हमारे पास इन्होंने कोई नोटिफिकेशंस भेजी नहीं। ऐसा क्यों? देखें यहाँ पे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है। अपीयरेंस है, नोटिफिकेशंस है, लेकिन लेट्स सी, मैं अगर जाके कहूँ फोकस शोकस ये सब हटा दो, ठीक है, नोटिफिकेशंस में नो न्यू नोटिफिकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ हो गया। सही हो गया। अब हमने कहा कि आप नोटिफिकेशन जो है ना वो कर दें ऑन। नोटिफिकेशन एंड एक्शन, ज़रा देखते हैं इसको, परमिशन तो नहीं चाहिए हमारी। नोटिफिकेशंस ऑन है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि हम क्या इसमें और एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं कि नहीं। रीस्ट्रीम तो नहीं है यहाँ पे। रीस्ट्रीम चैट नहीं भाई, ये या तो बग है या तो इन्होंने ये फीचर इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। रीस्ट्रीम चैट, या तो ये मसला है कि इन्होंने ये फीचर रखा हुआ है कुछ लोगों के लिए और बाकियों के लिए नहीं रखा हुआ। ये काम भी हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। अच्छा, एक काम ही करते हैं,
इसको ज़रा अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं डॉग को, और लेट्स सी इफ आई कैन गेट दैट डन। रीस्ट्रीम चैट। अब ज़रा भेज के देखिए कोई मैसेज, लेट्स सी इफ दिस एंड्स अप इन टेकिंग आउट एनी नेम्स। इसको ज़रा सा थोड़ा सा छोटा करते हैं, सेटिंग्स। नहीं, देखें कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रही है इसके अंदर। बग्ड है ये, बग्ड। नहीं, कोई साउंड नहीं आ रही मेरे पास। दोबारा कोई मैसेज करना। क्या आप लोगों को कोई साउंड आ रही है? आर यू रिसीविंग एनी साउंड्स? आई एटलीस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन जिसमें मुझे हाँ एग्जैक्टली अब मुझे ये नोटिफिकेशन तो मुझे आ रही हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। नाउ ट्राई। अब ट्राई करें। लेट्स लेट मी फिक्स वन थिंग। अब मुझे आवाज़ स्टार्ट आना शुरू हो गई है, लेट्स सी। Fida Mohammed. Did you hear? क्या बात है यार, फिक्स्ड इट। यस, नाउ आई कैन हियर। Fida Mohammed. Hi. Pulmet 97. No screen in Twitch. दैट्स सैड। ओके, लेट्स सी इफ आई कैन सी ट्विच। Twitch has been so weird. I am not sure what happens on Twitch at all. चलें, सही है। अब कोई मैसेज Fida करेगा? Mohammed. It's working now. सही है। if someone sends me a message now, I should be able to hear it. Good हो गया, ठीक है, awesome. Nashra Tahir. सही है, okay. Now I can focus on working, and if you would be sending a message, so I will most definitely hear it. ठीक है, and then I'll respond. In the meantime, I'll be working in this case. तो अगर वाकई कोई सवाल हो तो पूछें, बिला वजह डिस्टर्ब मत कीजिए। Umar Katab Alam Jwaya. Hi.
Hey Omar, how's it going? Sorry about जो नाम इसका पढ़ा गया, but hey, how's it going? It's funny आपका it's funny how it takes the names. Stream Elements. Code with Ahsan is now live. Streaming software and game development, CO working stream, Focusdoro and Angular Cookbook. Mm-hmm. That's right. Or let's see.
Umar Katab Alam Jwaya. Bro, I'm WordPress developer. What ya think? What is the future in WordPress developer? उमर आई थिंक जहाँ तक फ्यूचर की बात है इट्स वेरी डिफरेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि देर देर आर सो मैनी वेबसाइट्स जो ऑनलाइन हैं और दे आर ऑन वर्डप्रेस. तो देर इज आई मीन दे पीपल विल नीड वर्डप्रेस डेवलपर्स until everybody gets away from WordPress. ठीक है, does that make sense? So they are still working on WordPress sites, which means you have more work. um, आई थिंक एक चीज़ जो माइंड में रखने वाली होती है वो ये कि यू डोंट गेट स्टक इन टू वन टेक्नोलॉजी ऑलवेज फॉर एवर. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि यू कैन वर्क विद डिफरेंट, यू कैन स्टार्ट लर्निंग समथिंग apart from WordPress as well if you want. That is always beneficial. WordPress itself has a market, but I think when it comes to customization तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा possibilities नहीं होती या इतनी easy नहीं होती. तो that's why people usually go for custom web development rather than WordPress या कोई CMS. ठीक है, तो I think it really depends, but I think it would be interesting अगर आप कोई और चीज़ या HTML CSS JavaScript साथ साथ लर्न करो. बट अगर सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हो कि इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक कि इसकी डिमांड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस. और एक काम ही करते हैं कि ज़रा नोटिफिकेशन में से वो हटा देते हैं, निकनेम्स हटा देते हैं. Thank you, Red Heart. यू वेलकम रेड आर्ट. ओके, सही है. चलें देखते हैं यार. अच्छा, ये तो कॉपी कर लिया था ना, ज़बरदस्त हो गया. 8.3 8 point TDF at without form validation. TDF Bro, I am good in Python, but I have not tried it for web development. इसमें क्वेश्चन क्या है? I'm good in Python, but I have not tried it for web development. So you have not worked with any backend APIs या REST APIs. तो you can start doing it. अगर अगर क्वेश्चन ये है तो आप बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है. नहीं, ये क्या किया मैंने, चेंज कर दिया. ऐसा क्यों किया था? हाँ ओके, विथ फॉर्म वैलिडेशन. और फिर आखिरी जो है इसको मुझे चेंज करना चाहिए था. नहीं, एक मिनट. सही है. फाइनल आउटपुट सही. तो आई होप डेट मेक सेंस. आप डेफिनेटली देख सकते हो पाइथन जेंगो के क्या ट्यूटोरियल्स हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. कितना टाइम रह गया? 13 मिनट्स. ओके, let's get in the next section to understand how it works in the ngform directive by creating a template variable using the ngform directive and using the ng model to a data binding along with the name attributes for the inputs in the template. We began by adding the forms module in the version control component class. We began by adding the forms module in the version control component class. Then we added the okay, which is important. Once we added the module, then
it could be instant. We added the ng model to the version input and a template named version to it. That when we say, when we write, वही क्या खुल रहा है मेरे पीसी पे? वेलकम एस नयाज, नो थैंक यू। ओके, तो जब हम ये कहते हैं कि लेट्स सी, notice that when we write version equals to ng model, Ahsan Bahi, why are you moving from web development to machine learning? I'm not moving to machine learning, I'm going to look into it. दोनों में फ़र्क है। I'm not gonna leave web development ever, क्योंकि वो मेरी strength है। तो I think अगर मैं एक चीज़ में बहुत अच्छा हो जाऊँ और फिर मैं उसको completely छोड़ दूँ किसी चीज़ को नए तरीके से, या किसी चीज़ में किसी न्यू चीज़ में completely घुसने के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़र्व चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में कम्प्लीटली न्यू हूँ तो मेरी मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं होगी जो मेरी एक्सपर्टीज़ के साथ है। तो आई एम नेवर गोइंग टू लीव वेब डेवलपमेंट। मैं मज़ीद उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग जो है वो ज़रूरी नहीं है वो वेब डेवलपमेंट से हट के ही हो, मशीन लर्निंग वेब डेवलपमेंट के साथ भी हो सकती है। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो कि मुझे देखने हैं, जिसको मैं मशीन लर्निंग, जिसमें अगर मुझे मशीन लर्निंग आती है तो मैं आई कैन डू गुड विद दैट, या फिर मेरे पास इतने पैसे हों कि जिसको मशीन लर्निंग आती है मैं उससे करवा सकूँ, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इट डिपेंड्स, और मेरा शौक भी है कि मैं अपने फ्री टाइम के अंदर उन चीज़ों को देख सकूँ। तो व्हेन आई सेड आई विल लुक इनटू मशीन लर्निंग, दैट डजंट मीन कि मैं वेब डेवलपमेंट छोड़ के मशीन लर्निंग पे जा रहा हूँ। तो आई होप दैट मेक सेंस। Ahsan, what is the story of Angular Cookbook? How you started writing it? Good question. So I started writing it because someone from Pact basically reached out, or this is the book. This is the first version of the book. Um, the story is that the publisher reached out to me on LinkedIn and I think on my email, and then they said, "Hey, do you want to write a book for us?" And I was like, "Oh, that could be interesting." I already had a course with this publisher on Udemy before. That course did not do really well, to be honest. That is because it it was sort of something that was a bit time based, and then because I created a course on Ionic, and then React Native became too popular, and then Ionic eventually got a bit slow. Now Ionic is being popular again because of it's a sort of framework agnostic, but yeah, so that didn't do very well. But the pack publishers then reached out and they said, all right, can you write a book? I said, okay, yeah, I'm gonna try it. And then I eventually ended up writing this book of about 600 pages, something something. And yeah, then I saw the sales of this book. It went really good, and I was really happy with that as well. So then the publishers reached out again, but now there was a specific team from the publisher, and they are sort of the experts network team. And that means that if your first book does really well, then they reach out to you for the next version. So now I'm working on the second version of the book, or second edition, and yeah, that's how it worked. Was that your question? Did I answer your question? I hope I answered your question. Mhm.
Ooh. NG model is actually NG control behind the scenes. It implements on changes and on destroy. And then it has a view model. Then it has a name. Is disabled. It has a model. And then, hmm. Oh, interesting. That is an interesting topic. I'm looking at the NG model thingy, and then I'm looking at, I could actually talk about it. Setup control, set update strategy, standalone. It's really interesting. There's so much happening in the file. Anyways, I need to look into the version itself. So if I say, all right, give me a version here, then I get to say ng model, right? And then I can just do a console.log form. Let's see. How far are we? 6 minutes. Okay, that's good. No problem. And then the HTML, save it. Okay, what happens if I say 2.2.2? Submit. Okay. What is the form exactly? It's an ng model, but which contains a form control. But the form control, hmm. Assalamu alaikum Ahsan bhai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Saim. Kya hal hai? How's it going? Yes. Okay, let's remove this. Let's revert this change, and let's revert this change. Okay, good ho gaya. Yaar, Ahsan bhai, would you rather join a startup or a well-established service-based company assuming you are in development field? it depends on different scenarios. For example, right now, I would probably go into a well-established company, and the reason for that is because of the situation. The world situation is pretty weird. So unless the startup is well funded, I may not risk right now the jobs. And one of the major reasons is because right now I'm in a phase where I have a working visa in Sweden. So in order to live in Sweden, I have to be employed. If I'm not employed, then I cannot live in Sweden so far. So that's why I cannot really join a startup at the moment. But if situations were different, I might consider joining a startup. Startup has its own sort of learning experience, and then enterprises have their own learning experience. In a startup, you get to learn a lot in different areas. You're looking into DevOps, you're looking into, I don't know, your backend architecture, you're looking into front end, you're looking even into a lot of user stories and case studies, a lot of A/B testing, a lot of QA even. In enterprises, the scenario is a bit different. In enterprises, you learn first of all a lot of things at scale, and then also a lot of practices and a lot of methodologies. So yeah, I have worked in startups and enterprises, both. Right now, I think for at least maybe 2 years or maybe more, I would probably work on enterprises. What would you work with, startups or enterprises? What would you prefer? Startup. And why would you use a startup in this case?
Is it because of a lot of learning, or is it because of the startup culture? Because if the learning factor. Because of the learning factor. Okay, that makes sense. Do you have a startup in mind that you want to join, or any startup company that you like? Just researching about some. Awesome. That's good. That's really good. Yeah, I think it's a good strategy to research about them and then just reaching out to their employees on LinkedIn. Just don't spam them. Do you have any emerging startups? I mean, depends. Which city are you in? Karachi. Karachi. I think. I mean, it really depends. I I would say look into the incubators. For example, NIC could be one of those. Then also Nest.io could be one of those. You could look into a bunch of startups there, Quetta. and then also oh, my camera died. Let's see. Let's see if I can change the battery. Hmm. Okay, should be good. In three, two, one. Yay! Awesome. Quetta in Karachi. Yeah, I think look for a Nest.io or any sort of incubators and the companies in within, and I think then you can find good opportunities. But I personally don't know about a lot of startups. I know a lot of people in Karachi have consultancy firms or software consultancy, but not really startups or startup ideas. I don't think I know much startups in Karachi. If the value in the control is valid. Okay, we also added. Okay, Zabardast. So we got a. Thanks for the guidance, Ahsan. No problem. No problem. Happy to help. Okay, so we have a break time. So I'm gonna go and come back after the break. So let's see if I can get a. Mhm. I think I should be looking into studio mode. Let's see. And what was it? Break time? No. Let's say be right back. And then can I have? I'm looking at कि मैं अगर ऐड कर सकूं पोमोडोरो वाली चीज़ को to the other one. Just chatting. Let's see if I can. Pomodoro clock. Be right back. Where is the be right back? There it is. Paste. Pomodoro clock is there. Um, let's see if I can add it correctly. We will be right back. Hmm. Changing so many things. No, no. Control Z. Frameworks for. No. Nope. Nope. Pomodoro clock. Let's move it like here. Then we have the text here. Yes. ये प्रोडक्शन पे जो काम करता हूँ ना मैं, ये बड़ा ही रिस्की है. ओके, फिक्स्ड. ओके, सही है. तो अब स्टार्ट करते हैं और देन आई विल बी राइट बैक. स्टूडियो मोड. और फिर हम जा रहे हैं ब्रेक पे. तो बी राइट बैक. एंड यू कैन कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस. इट्स फाइन.
Ahsan Bahi, will you take your courses from beginner to some advanced level with some projects?
टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी होता है, तो वापस आ गए। आप पूछ रहे हो एहसन भाई, will you take your courses from beginner to some advanced level with some projects? Yes, most likely yes. Abhi what we have done is we have started working on the web development course, It's okay, Bahi. so we'll start with that, or most likely we'll go a bit advanced later on. Yes, so the answer is yes. Then we added the ng submit handler to the form element, so we can add the new version to the versions log. Okay. Edit the respective function for the named, what did we name the function? Named form submit. Named form submit in component file as well. Acha, let's have a look at and let's see if this is readable. The key to using template driven forms in Angular resides in the forms module, the ng form directive, and then creating a template. No, it doesn't make sense. The key to using template driven forms in Angular resides in the form module. And the ng model binding. This would almost always include a template variables. Along with the name attributes for inputs in the template. We begin by adding the forms module in the version control component class, which is necessary for using the ng form directive and the ng model two-way data binding. Then we add the ng model to the version input and add a template variable named version to it. Notice that when we write Your mean stack videos deleted. My mean stack video is deleted? Saim Malik, no, it should not be. Let's see if I can find it. Wait a second. Studio. Did you say mean stack or MERN stack? This is not good. No, I mean I have the video already. It is yeah, it is Mean. public as well. Mean stack. I did not have mean stack videos ever. I don't think I had mean stack videos. I did have a full stack video, but that was sort of mean, but not really. So to say, I mean, it really depends on how you look at that. Timeout segment.
I do have a full stack video. Just we have Angular, Nest.js, or I think MongoDB as well. Full stack. The meme generator app was also full stack, by the way. Why don't I have it monetized? That's interesting. Get shareable link. Or here you have it. That is the meme generator application. And then this one that I'm sharing right now in the chat. This one is the full stack web app जिसमें हमने फ्लैश ऐप फ्लैशबैक गेम बनाया था. So you can watch both of those actually. Okay. Notice then when we write version, that means that the version variable template variable is now an Gmodel instance through which we can get the value of it and can also see if the value in the control is valid. We also added the ng form attribute form element, similarly creating a version form. Was it version form? Yes, version form. So we can use it to see if the entire form is valid. Then we added the ng handler to the form element, so we can add a new, so can trigger function when the form is submitted. We also added a respective function named form submit in the component in the version control. In the version control component class as well. Notice we passed the version form from variable to the form submit method, which makes it test the functionality for us. Upon submitting the form, we use the form value to create a new version. Either the empty input or an invalid version format. This is because we validate the version in the, this is because we have required on the input element attribute set on the input element as well as the pattern attribute. Hey Asad Baloch, how's it going, Asad? Thank you for the follow. Is the stream working fine on Twitch now? It was not working fine before. Is it working fine now? Because if that's the case, then I should be just starting the stream and then restarting the stream every now and then. Oh, one of the things that I've just noticed is that I wasn't focusing at all. Now we are focusing. I also need to add the a configuration in the Focusdoro, so I can say, all right, now I need 15 minutes or 20 minutes or something. But maybe something for the future.
Not today. Pattern attribute. Okay, uh what else do we do? Mm-hmm. Sir, can you please your setup if possible? Show. Sir, can you please show your setup if possible? Yeah, absolutely. Let's see if I can enable the second camera. I'm not sure how much of it I would be able to show you, but let's see. It's not in the best situation right now, but I think I could still show it. Studio mode. Screen and cam. Logitech cam. Then just chatting. Paste it. Enable it. Why is it? Oh, what? Wait a second. Filter. Okay. Yeah. What if I do it like this? Should I? Let's see. Yeah, I might be able to do it this way. Give me 1 second, and I should be able to show it to you. Okay, let's see. One more second. Okay, I think I'm ready. So give me 1 second. All right, let's see. Nahin yaar, I think it's going to be very, very, very difficult. Yarhamukallah. Okay, give me 1 second. Give me 1 second. Now it would work. सही है यार. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सही है. Now it would work. देखते हैं ये तारें हमारे साथ काम कर पाती हैं कि Can't see नहीं. or hear anything on Twitch web app. Although could hear you on Twitch mobile app. Interesting. I have no clue why. But let's see. Okay, तो ये आ गया हमारा. Let's do it like this maybe. चलें स्टार्ट करते हैं. तो this is the setup. ये जो है वो ये सारी तारें हैं. This is my camera, or this is, sorry, not my camera, but this is the microphone जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. Shure something something. That's the keyboard. Stream Deck. ये अभी वो लैपटॉप है जिस पे एंगर कुकबुक लिखी जा रही है. I'm not sure how much of this you can see. That's a PC. That's the Angular cookbook. और ये ओवरऑल सेटअप है जिसमें this is the primary light, and Console gamer or PC gamer. that is the Laughing face. secondary light. So yes, I think that is pretty much it overall. वहाँ पे that's a secondary table, लेकिन I don't think that is going to be used much. But yes, and then here we have the shelf.
So yes, I think yeah, that's pretty much the setup. तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको zoom in कर रहा हूँ तो it looks something like this. So you have the PC, you have both of these screens essentially, and the table, and then this. So not too much. I think the main thing is, for example, these. ये भी, for example, this is also, I think, a very cheap Code with setup. Ahsan is now live. Streaming software and game development, co-working stream, Focusdoro and Angular Cookbook. That's right. तो अगर अगर मैं इसको summarize कर दूं तो pretty basic setup overall. Let's fix this again and let's put this back. Console gamer or PC gamer? I would go with PC. So not too much into console, to be honest. I mean, I had Switch, लेकिन Switch के अलावा not really much, to be honest. So yes, and let's get rid of this guy. Cool, much better. That's gonna be PC for me. अपना बताएं, what kind of gamer are Which you? games you play often? Mostly Dota 2. जब ज़िंदगी में खुशी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो मैं Dota 2 पे जाके अच्छी बातें सुनता हूँ लोगों से. Mostly from the other side, but sometimes from my team as well. Mostly Dota 2, I would say. Kia, seriously man? Yes, I used to play a lot of other games पहले. I used to play Call of Duty, Warzone. उसके अलावा I used to play Apex Legends quite a lot. तो I can't imagine a sensible person like you play Dota 2. it depends actually. You've not seen me play Dota 2. It usually depends on the team, from a team by team basis. Sometimes you get good players, sometimes you get trash players. But it also depends on I play Dota and half of time is in it. yes, I can imagine. Sometimes it's fun, sometimes it's not too fun. But I think I enjoy these days, especially because I'm usually playing the support role. So I'm playing with Chris. I'm mostly playing with Crystal Maiden. BTW rank Kia Upka, laughing face. I don't know. Should I check? Should I check my rank? How do I check my rank? Is it gonna be in? How do I check my rank? इससे अंदाजा हो गया होगा कि I have no clue about ranks. Let's see if I can see the rank. Maybe it's on the profile. How do I check it? Would I check it on stream or would I check it on? No, you should be able to hear the sound. We have taken action against one or more people. In the game? Oh, wait a second. I should. On the top left side. I have 688 wins, 279 comments. Or how do I check my rank in this case? I don't see my rank. 72%, something. Your skill this season is displayed by a rank medal. Herald, Guardian. Herald. It is Herald, not Guardian then. I think it's Herald. If that's what you're asking, right? So I don't think I've played much. I play like one game or 2 games max. Like every other day. Under your profile picture you might be uncalibrated maybe? That's interesting. Could be the case.
But shouldn't it say? It says seasonal rank medals. Okay, so it's not that. Main menu, wins. It's not wins and comments then, right? It's something else. Wins, comments, comments, none, wins, comments, matches. It shows matches. It shows match MVPs, overall matches. No. Most recent 20 games. Nah, nah, nah. You should stream someday. Dota stream. Laughing face. We'll see. We'll see about that. But maybe we'll do it. That would be fun. But I would be playing so bad. Crystal Maiden. No, I don't see my rank. Is it because I don't have a rank? But I play ranked every day. Let me share my screen. I'm now confused, super confused. So here it is. It says Herald. Isn't this my rank? 72%. Herald. Herald, Guardian, Crusader, Archon, Legend, Ancient, Divine, Immortal. Are they not ranked? Each medal has 5 stars of progress before promotion to the next rank medal. Is this not my rank? This should be my rank. Or no? What am I missing here? On top left side where it is written 72%. Yeah, exactly. So Under your profile. Yeah, so here is 72% my rank. That's what I'm confused about. Is this the rank? So what is my rank in this case? It's Herald. That's my rank. What's your rank? Do you have a number on your rank, or what do you have on your rank? Herald 5. Herald 5 is your rank. Okay. Then I don't know what my rank is, but it seems like it's okay. It's maybe not Herald even 1. Seems like it. Like I'm 72%. So probably it goes to 100% and then becomes Herald 1 and then moves forward. I have no clue. But yes. Now your inventory. Herald 5 is yours. Herald 5 is mine. How did you know about that? Am I blind? What am I missing? Players earn medal by playing ranked games. Medals are visible to all players before, during each match. Rank plus count stars on it defines your overall rank. Aha. So these are the stars. Interesting. Interesting. Thank you. I did not know that. And how? And you said yours is Herald 7 or something? What is your rank? And how many heralds can I get? Is it so if I complete 100%, then I move to Guardian in this case. But I had Guardian. Like maybe it was not in this season because I was Guardian in the last one. Could be. I don't think I ever reached Crusader because I think Mine is Ancient 3. Interesting. Yes. I don't play that much. No. Not yet. Nope. Nope. I might play one game maybe before sleeping. Okay, so I do have my chapter complete, so I will now push the code. Push it. Let's see. I do have the version control HTML that was updated. Yeah, form, version form, ng submit, blah blah blah. Version input required, version ng model, good. Then ng if, great. What else? Nothing else. And here we do add all of that. Cool. Now I can commit.
git. No, first I also need to run npm run copy 08 ngtdf. Cool. Now I can say git add, git. Ooh, no, not git add. I need to remove the start ones. Nope. And nope. Cool. Now I can commit m chore ngtdf final files, and I can revert the start, and now I can push it. Cool. Okay, good ho gaya. Now I can actually move to the to that here actually in the PC. Let me move that there, move it here, bring it up here. Now I can go to the Angular Cookbook code base. And second edition. There you go. Bring it up here. Okay. Git status, git fetch. And we should have one of the reasons I actually bought a secondary camera, now that I recall it, it was actually to be able to show the keyboard. Logitech cam. Nope. Like this. But I'll probably set it up later. That's fine. Git pull. There we go. cd CodewithAhsan. npm run build. Just making sure we have the latest code and we have the latest build as well. I actually want to finish at least 2 recipes, so we are good. But we'll see. Okay, so now I could say npm serve and gtdf both. Let's actually see if I can. Oh, okay. Let's see. I'm not sure what it does so much. I have no clue what this is doing, but I'm assuming this has something to do with NX. Or we'll see. We'll know. चलें जी देखते हैं. In the meantime, let's also create one more application. So I'm going to say npm run create reactive forms, or let's name it ng reactive forms. And we'll say, and this is going to be chapter 8. And then this is going to be having a title similar to what we have for the for this one. The title here was, okay, give me 1 second. The title here was Angular template driven forms. So so here it should be Angular reactive forms. Reactive driven forms. Nope, reactive forms. And let's create this application. ठीक है, ये create हो रहा है. In the meantime, this is the starter position and this is the ending position. So if I try to do something here, 222, this is not good. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस शुड बी डूइंग समथिंग. तो हमें स्टार्ट के अंदर वी वुड हैव टू मेक ए चेंज. व्हाट डू वी हैव टू चेंज हियर?
क्या हमें फॉर्म वैलिडेशन लगानी पड़ेगी या व्हाट एग्जैक्टली? इन दिस केस I'm confused. We'll see. Chapter 8. Nope. Drive. Let's see if I can get the drive out or यहाँ से देखते हैं. Code with Ahsan. Nope. हमारे पास होना चाहिए packed. Second edition. Chapter 8. And then what did we say? That's not good. Chapter 8. Is that the one? Hmm. That's the one. Okay. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि what happens first? Okay, सही है. Then I think I have an idea. ठीक है. तो फिर what we have right now, I think we're gonna continue with that. So we do have the template driven forms. Initially nothing works, but if I go here and say to it says number doesn't match, that makes sense. If I remove everything, it says version number is required. If I add something that doesn't match, it says that. But if I do 22.1.0, that's valid and I am able to add that. 1, 2, 3, 4. So I can keep adding the versions in this case. But then if I remove everything, then it says version number is required in this case. Once I've submitted it, that makes sense. So I'm gonna remove this. And now we are going to create one more. Oops. Now we're going to create one more for the reactive one. I would want to see if there's any CSS file. No. App component. Nothing here. But I would have to add the version control here. Okay, that's fine. So I'm going to copy this and nothing in the routes. I don't need the version control here. Then I'm going to just copy the components here. So components have been copied and now I should be able to serve it. So we're going to serve the, I'm going to stop this and just serve the ng reactive forms. Serve ng reactive forms. Let's see. Okay, so we got Angular reactive forms here. Now let's add the components. So I'm going to go to app component. And in here, I'm going to import the version control component. And then I can add that to the template right here. App version control. And there we go. We can see the component here now. 222 submit refreshes because there's nothing implemented. So I think this is a good start. I can add a new one. Make a commit. So this is going to say Angular reactive forms. Okay. But should it? Yeah, I think it's fine. So then we do git status, git add, git commit. We got a break time. So I'm thinking if I should take a long break or what. All right, I'm going to take a long break, which means that now I'm going to stop the stream.
So whoever joined, thank you so much, everyone. I'm gonna try to finish the recipe soon, but this was fun. Thank you for joining. Take care of yourself, take care of your families, and for those who celebrate or observe Ramadan, Ramadan Mubarak. I'm gonna see you later. Bye. Thanks for the stream. No Ciao. problem. Asazali, no problem. See you later. Bye.